Namaskar. I wish all of you are safe at home. So, guys, equipotential surfaces. Okay, what do you mean by equipotential surface? Now we have three words here. First is equi means equal. I hope you have guessed. Potential, I hope we have already studied potential. That potential is the capability. Okay, potential is the characteristic of any location, of any point. We have already learned that if the location changes, the potential also changes. Because what is the formula of potential? So the formula of potential is 1 upon 4 pi epsilon naught source charge upon r. What is r? R is the distance of that point from source charge. So equi means equal, potential means this, and surface. So we have to draw a surface. Okay. Now, for example, let us have a source charge which is positive. Okay. तो सोर्स चार्ज को हम बड़ा क्यों ले लेते हैं? अब this source charge will give out this electric field in every particular direction, and what we do, we draw a sphere of equal radius. So what do we see? That this distance is r, this distance is also r, this distance is also r, and this distance is also same. So at this point and at this point the potential is going to be same, and every point on this spherical surface the potential is going to be same. Why? Because the distance is same. Okay, so the potential is same at every point. Okay, now अब हमें क्या करना है? अब मैं एक थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ. Now guys, assume this surface, okay, and this distance, this all are the same radius for this given circle, and the potential at every point on this assumed surface is same. Now what I want to explain is that if suppose this here there is a charge Q0, and if I want to move this charge from point A to point B, okay, so what will be the work? इस टेस्ट चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है इस सरफेस पे? सेम. इसलिए इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैंने A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर एक चार्ज को धक्का मार के लेकर गया तो वर्क डन कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जिसे वर्क डन कहां से कहां करना है? A से B. तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ओके नो, ये है पर यूनिट. So work done per unit test charge is the potential difference. Now VB and VA. Look, the point B and point A lies on the same equipotential surface. So the potential at point B and at point A is same. Therefore, work done from A to B upon
Q naught will be 0 because both will be same, and Q naught into 0 will also give you 0. Therefore वर्क डन A से B तक का वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, एंड इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो वर्क डन. ओके, अब एक और बात आप समझिए कि हमारा जो वर्क डन है, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं इस Q नॉट को ऐसे लेकर जाऊं या ऐसे लेकर जाऊं या ऐसे घुमा के ऐसे लेकर जाऊं, मैं लेकर कहां से कहां जा रहा हूं? A से B तक. रास्ते अलग अलग हैं, द पाथ इज डिफरेंट, बट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? Electric field is a conservative physical quantity. Okay, so जो भी कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करता है वो डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे, ना कि द पाथ फॉलोड. है ना, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, displacement depends on the final and initial position. It is independent of the path followed. In the same manner here, आप ये वाले रास्ते से लेकर जाएंगे यहाँ तक, या आप ये वाले रास्ते से लेकर जाएंगे A से B, या आप कोई भी पाथ को फॉलो करिए, the electric field is conserved. Okay, so आप लोगों को ये बात याद रखना है कि the potential difference or the electric field is independent of the path followed. Okay, हर बार आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी रास्ते से लेकर जाए. ठीक है, सो गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको समझ में आई? क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इट इज ए सरफेस at which the potential at every point is same. है ना, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वही है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस सरफेस की हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम. तो द एनी सरफेस एट विच any surface on which at every point the potential is same is called as equipotential surface. ऐसे ही हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं. ठीक है, नाउ so guys, let us discuss about the properties of equipotential surfaces. हमने पहले क्या देखा कि मान लीजिए ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है और यहाँ से हमने इक्वल डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल सरफेस बना ली, और पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस द पोटेंशियल इज सेम. ओके, सो हमने क्या देखा कि भाई अगर मैं इस सरफेस पे किसी भी टेस्ट चार्ज को रख दूं, ओके, और उसे अगर इस सरफेस पे मूव करवाऊं, ओवर द सरफेस में मूव करवाऊं, तो वर्क डन कितना होगा? हमने देखा कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या मिलेगा? VB माइनस VA मिलेगा. पर हमने क्या देखा कि द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, सो बोथ विल बी सेम एंड दिस विल बिकम 0, and multiplying this with 0 will give us work done is equals to 0. And if you remember this two equations along with the figure, you don't have to mug up this. So guys, it is very clear to you that हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है इस सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं. अब अगर मैंने एक चार्ज को रख दिया, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कहां से कहां जाएगा? कहीं ना कहीं से जब जाएगा ना, तो वो कहां से कहां जाएगा?
तो in an electric field, the charge can move from a higher potential to lower or lower to higher, depending on its charge, whether it is positive or negative. Okay. But electric field, what about electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाएगी? तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी and also electric field is independent of the path traveled, and also the electric field flows from higher potential to lower potential. ये आपको याद रखना है। तो guys, I hope the first property of equipotential surface is clear. Okay, now let us move on to the second property. So property number 2 is that the electric field is always normal to the equipotential surface at every point. So guys, what does this mean? Now we have a test. No, we have a source charge here, Q, and it is a unit positive source charge. What it will do? It will radiate the electric field outwards. So this is the electric field, this is the electric field, this is the electric field. So the electric field is radially outward because it is a positive source charge. And how to draw a equipotential surface? Here, if we know the electric field, okay, so we know the electric field, we will take equal distance. We will take, suppose R on this line, we will take R on this line, we will take R on this line, we will take R on this line, R and R, and we will simply draw the circle, and this surface is the equipotential surface. Now see, what are these electric field lines representing? These electric field lines are passing along the radius. Okay, now this is nothing but electric field, this is nothing but electric field. Every line is electric field, and the electric field is also the radius of the circle. What I mean to say is कि भाई रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो रही है। यहाँ पर यही रेडियस है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, isn't it the equipotential surface having the same potential because the distance is same? So here the angle will be 90 degree. Here the angle will be 90 here. So at every point where the electric field lines are meeting the equipotential surface, that angle is 90 degree, and that is why it has written that the electric field is always normal to the equipotential surface at every point. जितने भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हर पॉइंट पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, now guys, again this is a source charge. What is this? Electric field lines. Now taking the same distance we can draw an electric field. Okay, taking a bit larger distance we can draw
another equipotential surface. So this is another equipotential surface. So this is equipotential surface number 1, equipotential surface number 2, equipotential surface number 3. So what I meant is that all the equipotential surfaces are parallel to each other. It means that this equipotential surface will never intersect with this. This will never intersect with this. So the equipotential surfaces never intersect each other. That is the property number 3. Now the last property. अच्छा इमेजिन करो कि एक पोटेंशियल, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस से इंटरसेक्ट हो ही गई तो क्या हो जाएगा। तो अब मान के चलिए कि भाई इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू है VA, तो एवरी पॉइंट पे VA ही रहेगा। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू है VB, तो बताइए एट एवरी पॉइंट वैल्यू कितना रहेगा VB। अब इमेजिन कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ये सरफेस से ऐसे टच हो ही गया। ओके, ये है अपना VA वाला और ये है अपना VB वाला। तो इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे पोटेंशियल कितना लूं, VA लूं या VB लूं। सो दैट इज व्हाई इफ they intersect there will be two values of potential on a point and it is not possible कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा, है ना। और अगर दोनों कट कर रहे हैं तो किसका वैल्यू रखेंगे हम, VA या VB। सो इट इज नॉट पॉसिबल गाइस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यूज इम्पॉसिबल है। नाउ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल, ये दूसरा, तीसरा। सो दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर when the distance is small and the distance between the equipotential surface increases as we go on further. So that is what you need to understand guys. Okay, तो हमारे पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आएगा, that is E is equals to minus dV by dr. What does this mean? That the potential, V is potential, the potential is decreasing with respect to the R. What is R? This is R, or this is R, or this is R, or this is R. So as the R is increasing, the potential is getting decreasing. Okay, or the electric field decreases. In terms of this equation, minus dV by dr का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाएंगे, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हमने डिस्कस किया। सो मतलब दोनों ओवरलैप हो रहा है, सेम नहीं है, ओवरलैप हो रहा है। अलोंग द रेडियस ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हम बोलते हैं कि the electric field is radially outward or radially inward because it is along the radius. Okay, now electric field increases, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है with respect to distance. So guys, यहाँ पे प्लस साइन,
So E is equals to minus dV by dr. So guys, what do we get? We will get dr is equals to minus dV upon E, and therefore we get dr is proportional to 1 upon E. Okay, so what is dr? Dr is the spacing between this spacing dr. So the spacing is inversely proportional to the electric field. Okay, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहाँ पे स्पेसिंग कम होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा होगी. समझ में आ रहा है? So this is the property number 4, okay, which says that equipotential surfaces are closer together in the region of strong field. Okay guys, so that all you will get in the prescribed book. I hope you know the book and go through that book. Topic number 2.8, equipotential surfaces and their properties. Take care guys.